let's start. Open your browser, then type VS Code. Go to the first link और यहाँ पर आप विंडोज पे क्लिक कीजिए. Then click on the download और it will start downloading. थोड़ा टाइम लगेगा. आपका नेट फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, और लेकिन स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट कीजिए. और अगर आपको VS कोड का पूरा इंस्टॉलेशन एंड सेटअप देखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो भी चेक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं. तो नाउ ये डाउनलोड हो गया है. लेट्स प्रोसेस टू इंस्टॉल इट. जस्ट अ वेट. Okay, now repeat the step which I do. Okay, click on add to the desk. Next. It will take a few minutes to install it. If your network is fast, then it will going to install very quick. It's almost done. Uncheck the box and click on the finish. Now we need a compiler to run our C program. So type mingw. आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी, वो लिंक को ओपन कीजिए. गो टू द फाइल्स. यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएंगे mingw के. So download the latest version for your PC. It will also take some time. तो थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए. It will take around 1 minute 2 minutes. मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सो मैं फिर से कर रहा हूँ. लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक माइनर चेंज है. वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या चेंज है. क्लिक ऑन इंस्टॉल, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. आपको यहाँ पर इंस्टॉल आएगा. मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ. नाउ फॉलो द सेम प्रोसेस. इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको कंप्यूटर को ऑन रखिए. नाउ वेट. ओके, सो ये विंडो पॉपअप होगा. नाउ यहाँ पर सभी बॉक्स को चेक कर दीजिए. मार्क फॉर इंस्टॉलेशन एवरी सिंगल बॉक्स. फॉलो द सेम प्रोसेस which is I am doing. Okay, go to the installation, then click on apply changes, then click on apply and wait for a few minutes. And one more thing, it's not necessary to use this compiler. You can use any different compiler also, but if you are using mingw, it is best for C. I recommended you to use mingw. Okay, it's done. Now close the tabs. Then go to the file. Go find out mingw. Click on mingw. Then find the bin option, and now copy whole path. अगर आपको पता नहीं चला तो आप फिर से बैक जाइए और फिर से देखिए. नाउ ओपन द system environment variable. Click here, then go to the path, click on new and paste the path which you copied. आपने जो पाथ कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए. देन क्लिक ओके ओके एंड ओके, तीनों में ओके क्लिक कर दीजिए एंड इट्स डन. हमारा पाथ भी सेट हो गया है. अब VS कोड ओपन कीजिए और एक्सटेंशन में जाइए और C++ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है आपको. इंस्टॉल इट.
मेक श्योर कीजिए यही वाला है, और आपने कोड रनर इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर कर दीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने कर दिया है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोड रनर इज़ नेसेसरी फॉर सी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेजेस like Java or etc. Now let's make our first program in C language. Let me write a code. Include libraries, studio.h, then make main and write or printf hello coordinate family and semicolon. Save the program and run it. That's all for today. Thank you.